Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananaam Tva Ganapatigam Havamahi Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvandutiभिः Sadanam. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Sadashivasamadambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram. Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Vasudevendra Yogindram Natva Jnanapradam Gurum Mumukshunam Hitarthaya Tattvabodho Vidhiyate. Tattvabodho Vidhiyate. I'll request everybody to open their videos, except Sonia. तो हम लोग ने पिछले बार ये देखा था कि अनुबंध चतुष्टय करके कुछ होता है. There's something called अनुबंध चतुष्टय. And that Anubandh Chatushtay, what does it do? That Anubandh Chatushtay gives us the relationship why we have that topic with us. What is the relationship between that topic? What is my purpose behind reading that topic? So it was called Adhikari. It has Adhikari, it has got Vishay, it has got purpose, Prayojan and Sambandha. Can anybody tell me what is the definition of Adhikari? Oh, sorry, wait, I'll open you all. Yeah, I muted you. Yes. Amma, please correct me if I'm wrong. Arthi, Samarthi and Vidwan. Yeah, Say again. that is. So Arthi should be desirous to study, Samarthi should have the capacity, and Vidwan should possess knowledge. Very good. And last one? Shastrena avipari Yudastaha. Avaviparyudastaha. Very good. Very good.
Himanshu, could you hear the talks? Yes, Amma. Okay, why aren't you opening your video? Open your video. I want to see your nice face. So now the next one was Adhikaritva, and after that was, what was that? Vishay. What does Vishay mean? My knowledge of that thing which pervades everything. Very good. No, here in the Anubandh Chatushtay, when we are relating to Anubandh Chatushtay, Vishay will mean that what is the subject of that Vishay. For cooking, what is the subject? Cooking is a subject. When we were cooking, last time we had taken that example of when I'm hungry, I'm going to cook. So their Vishay becomes different. When I want to come to your house through a vehicle, Vishay will be driving. So Vishay keeps changing. So what is that? What is the Vishay here? Here, what you're talking about is the Vishay about what is pervading everything. Okay. Then Prayojan. What is the Prayojan? Ultimate, what is the ultimate Prayojan of everything? To annihilate the sorrows and escalate the bliss of self. Atyantik dukh nivritti and paramananda prapti. Yes. For getting knowledge of the self or for the highest knowledge or Vedantic text, this is the Prayojan. That Atyantik dukh nivritti and paramananda prapti. Okay. Then Sambandha. What is the Sambandha? Here, what is it? There are many kinds of Sambandha. Which Sambandha is here? Bodhya bodhak. Bodhya Bodhak. So this text is the Bodhak and Bodhya is me or my knowledge, the self, knowledge of the self. Okay. Next comes Sadhan Chatushtay Sampannadhikarinam Moksha Sadhan Bhutam Tattva Viveka Prakaram Vakshyamaham. You all must be having your books. You can go through it. So Sadhan Chatushtay Sampanna Adhikarinam. Now the topic is changing. We are going ahead. The next topic is Sadhan Chatushtay. The fourfold qualifications or fourfold wealth that a person requires here to gain this knowledge. So initially we may think that maybe we are adhikari or not. I don't think I'm a qualified person. But slowly what happens? We increase our adhikaritva. It's not that we don't increase our adhikaritva. Slowly, when we progress, when we hear to these texts, slowly our adhikaritva also increases. Okay. So sadhana chatushtaya sampanna adhikarinam, for those who have this sadhana chatushtaya, we will see what is sadhana chatushtaya today. Moksha sadhan bhutam. What are these sadhana chatushtaya? These are the moksha sadhan bhutam. These are the source or these are the vehicle for moksha. Okay, so to facilitate moksha. Tattva Viveka Prakaram Vakshyamaha. I am going to tell you. Vakshyama means it is a future tense. Vakshyama. What will I tell you? Tattva Viveka Prakaram. How to do Tattva Vivek? How to do Tattva Vivek? That I am going to tell you. Now, next is Sadhan Chatushtay Kim. Sadhan Chatushtay Kim. What is Sadhan Chatushtay? Sadhan Chatushtay Kim. Sadhan Chatushtay Kim. Sadhan Chatushtay Kim. What is Sadhan Chatushtay? Nitya Vastu Vivekaha. There are fourfold qualifications. What are those four? First one is Vivekaha. First one is Vivek. What is the second one?
Second one is viragaha, vairagya. Second one is vairagya. Third one is shamadhi shat sampatti. And fourth one is mumukshutvam. Mumukshutvam cheti. Cheti means cha plus iti. Fourth one is mumukshutvam. So the first one is nitya vastu vivekaha. What is the first one? Nitya vastu vivekaha. First one is vivek. What is it? Now we will see what is vivek. Then we will come to vairagya. Let's see how much we can cover up today. So nitya vastu vivekaha. See, now we will elaborate this one. Okay. So whenever we are into the highest knowledge, first and foremost, we saw that a seeker has to develop a conviction. What was that conviction? Can anybody help me out? Is that conviction something related to the world? Is that conviction he wants something from outside? Who is a seeker? How will you define a seeker? Amma, seeker means a sadhak. So a Hmm. sadhak is a person who makes a conviction, a dharana, with Hmm. that outer things, outer situations will not affect his life and it will not affect his inner peace. It won't affect his life and inner peace. How? Uh, because of the knowledge he will gain. The knowledge of Yes. the self will make him Yes. become oblivious of the outer situation. Yes. Not oblivious. He won't be oblivious. He's not a foolish person. He will try to dissolve it. He has got a solution inside. Solution is a very nice word. He's got a solution of knowledge inside that will dissolve the outer situations. Because outer situations we don't have in our hand. We cannot control it. So he Hmm. does not, his inner joy does not depend on the outer situation. He feels that my inner joy should not come down. See, everything we are doing for our joys and sorrows, I mean, to annihilate the sorrows and to get joys. So we want to elevate our mind to a certain level. And we don't want that that mind should come down from that level that we have reached. So this seeker, he is always wanting to work on the level of conviction, not at the level of situation. He will try it out. He is not a person who does not do purusharth, let me tell you. He is not a person who won't work. That is escapism now. He is not an escapist. He knows that outer situation depends on my prarabdha, on my karma phal. Maybe or may not be, I will get that situation. I may work very hard. There are so many people, even in the line of artists also, in the field of artists also. You can see there are so many good artists. There are excellent artists. Artists mean I mean painting and drawing and all. But not everybody gets that fame or name. That is due to some of his prarabdha. There are many singers, there are many musicians, but some of them get the limelight. Why does it happen like that? Because sometimes the prarabdha or my fruit of action is like that I won't get what I desire. But that should not hamper my level of joy that I have already inside. This seeker is always trying to maintain that level of his joy through maintaining that conviction that I don't need anything from outside to increase my joy inside. Even if I am a very successful person outside, even if I get what I desire outside, still that cannot compare my inner joy. It is good that it is coming. It is good that I am successful. It is good that I am having name and fame. But still, the joy, the inner joy, the meditative joy, the convictional joy that I have inside me is far more than the outside success. He has his conviction. Okay, so seeker is a different material.
Seeker has seeker is at the convictional level. Seeker does not work at the situational level. परिस्थिति पर नहीं, वो मनस्थिति पर काम करता है. He is always trying to see a change in his mentality, in his convictions. Outer person, even if he comes and he is talking rudely with him, he is not giving him attention. His joy, his level of that joy does not come down. He feels okay. This is my prarabdha. He has that acceptance in him, and he feels wherever I have to work, I'll work there. So he is trying to sublimate those um, sorrows through the solution of his knowledge. Sublimate, not suppress. These are two different words. He's going to sublimate, dissolve. Okay, so seeker is made when he lifts his convictions from the outer world to his inner world. But always remember, he's not an escapist. He knows the facts. He is very well versed about the karma and karma phal theory. He knows that whatever I am going to do, that fruit of action will come to me later on. So he feels that whatever has been coming to me has been created by me only. So I am the one who has created, the doer is in me. I have to annihilate that doer in me, not that situation. The situation is out of my control. When the doer, how does a doer come? What is the source of the doer? The ego that the me Directly, is doing, like. directly ego. In between, you have skipped some points. Desire. Uh, oh yes. Desire, sisters. Yes, desire. Desire means there's a sense of enjoyment. Bhokta, bhokta, enjoyer. That enjoyer, why does it come? Because I have desire. Okay, so first is the situation. How did that situation arose? Due to my karta, my doer. How did that doer come? Because I had an enjoyer, bhokta. How did that bhokta come? How did that enjoyer come? Because I had desire. I had something, some empty space in myself. And that's why I wanted to fill that, I wanted to complete that empty space. So that's why I had got desire. And desire is because I have got vasanas. Vasanas you can connect to a hankari or whatever. So in this way, there is a complete line going on. We have to come to our inner vasanas to correct myself. My sanskar has to be corrected. So this person, the seeker, is working always at the vasana level, at the sanskar level, at the conviction level, at the Karan Sharir level. We'll come to that Karan Sharir, what it is. So he's not trying to change the situation outside. Are we a seeker? First, question yourself. This is a class where you have to question yourself. Are we a seeker still? What are we aiming for? What is our aim in our life? What is the purpose behind whatever we are doing today? Continuously keep questioning yourself. Amma, Hmm. the seeker, in order to sublimate all the inner desires, or the out, or to sublimate, like, become like dissolve all the situations, which outer situations will not affect him, because he will sublimate all his desires, right? So for that he needs a very strong conviction, right? Because Yes, generally what happens is that it it generally happens to me, and some maybe others may also be able to relate. When I'm trying to like dissolve, or like think that this situation is not going to impact me, or it's not going to affect me, I feel that I'm suppressing it. So how to differentiate between that subliming and suppressing?
See, first you have to gain knowledge about it. The solution has to be there inside. Then only it can be dissolved, isn't it? So the solution, how do we? Solution means liquid. I'm talking about that liquid solution, not that remedy solution. So when that solution is there inside, then anything can dissolve. For that to be ready inside us, we need to hear a lot. Today our convictions are made. Then we have got so many wrong convictions, Supratim, in this world. Like we feel that wealth will give me security. It gives to a certain extent. It gives also, but not to the permanent level. I feel that fame will give me a lot of joy. Ask those people who have got fame. Can they sleep at night properly? Every morning they are so cautious. Tomorrow morning, I don't know what I'll have about, what will I see in the newspaper about myself. जो है नाम वाला वही तो बदनाम है. So we have got so many wrong convictions, and to correct those convictions, we need to hear, we need to listen. Shravanam is very important. So when we are listening, we are actually making the solution inside, the convictions inside, so that when that challenges come, I have a ready solution inside to dissolve that, to sublimate that. Outside person, that is why a sansari cannot be compared to a seeker. Adhikari, when you all are coming to this class, I am 100% sure that you all have undergone in this birth or past birth some questions in your mind. Otherwise, this class won't appeal to you at all. At all. When this questioning personality comes in us, at that time, we try to seek answers. When we try to seek answers, at that time, we try to listen to something. When we listen, at that time, we are making a solution inside. And then we sublimate the situation. We have to correct everything at the notional level. Many wrong notions are there inside. The joy is in the thing. We feel the joy is in the thing. We'll see today how the joy is not the characteristic of a thing or a situation or a person. Is it clear, Supratim? So inside we have to make a solution through Shravanam. Only Shravanam can help. And for how, if you question how many years, Amma, 20 years, 30 years, 40 years, even today I do Shravanam. I've already crossed 25 years in Chinmay Mission. You have to have a continuous source of Shravanam. Because only after Shravanam we can do Dhyanam. Mananam, then Dhyanam. Because otherwise, as you said, what will we think about? How will we continue our reflection? Mananam means reflection. Somewhere we will start thinking and then we'll get obstructed because we don't have a further flow of thoughts. Why we don't have further flow of thoughts? Because we haven't heard a lot. And when we go and sit in the seat of meditation, at that time, all our thoughts will get obstructed and we'll get up from the meditation seat. We'll get irritated, we'll get frustrated with our own mind. So a lot has to be heard. And I'm going to give you such platforms where you will also teach. I've got so many plans for you all. When you are teaching anybody, at that time you have to prepare. And that's why I'm so much keen on your making notes and all, because these notes will help you. When you are teaching, the mananan automatically happens. Isn't it? So in this way, Yes, this is a yes, Amma. procedure. Yeah, you are a teacher now, you will know better.
So that's the way or everything continues. Unless we have that solution inside, we cannot sublimate. We can suppress it, and suppression is not for a long time. It will burst somewhere or the other, either in frustration or irritation or anger. So it is best that we hear a lot and we try to create that sadhak vritti in us. We have to create a personality in us. We all have a sadhak personality, but it is a baby personality right now. Shishu. It needs nourishment to grow. And once we have given it nourishment, it will start growing. And then it will start questioning us. Then questions will come up. Then we will try to find answers, remedies to it. And in this way, we are trying to work at the conviction level. Our convictions need to be proper. Once so happened that Ramakrishna Paramhams had a devotee who used to drink a lot. Girish Then Goswami, yes. just try to listen to the story and then tell me whether he is the person, because there are many incidences of such person coming to him. Then he came to Ramakrishna Paramhamsi and he said that I want to get over this. I'm not able to come out of it. So he said, okay, whatever you are having, you should offer it to the Devi first and then you take it as prasad. He said, how can I do? How can I offer that wine to Devi Ma? And said, no, this is the way we should offer everything to Lord first and then take it as prasad. Now that conviction, at the conviction level, he had put a seed. He could not change it outside. He went home again 3 or 4 times he had it, but there was a conviction, strong conviction made in his mind that whatever I have, I should first offer it to the Lord and then I should have it. So something inside was tricking him. Though at physical level, he continued to drink. He could not control himself. See, mind level and conviction level, how they work. If you're convinced about something at the conviction level, at the intellect level, it will control your mind. It will control your mental level. We'll come to the difference between intellect and mind. It's also a part of the topic of Tattwa. So once we are working at the intellectual level, conviction level, slowly, it may take some time, it may take years also, but again and again, when we are repeating something at the physical level, at the mental level, that conviction will come and try to stop you. This is not proper, this is not good. And one day it will happen that that person will say, no, I will do as my convictions go. I will try to leave this. And then after 6 months, after 10 months, he left it. He said, no, I have to. He went to the Lord, he went to Devi Ma. He was crying profusely and he was saying that, how can I offer this to you? I cannot offer this to you. So what had been done by Ramakrishna Paramahansa? He had just sown the seed at the convictional level. That this is what you should do. Whatever you are doing, just offer it to the Lord and then take. Many a times at physical level, we may not be able to control ourselves. But take your own time. Let that conviction seep into you slowly. It takes time. Because to create a certain habit also at the physical level, we have taken a lot of time. We have repeated it so many times at the physical level, at the mental level. We have become angry so many times. And suddenly if I say, don't get angry, anger will take you to pap. Anger will take you to buddhi nash. You should not get angry. But I have repeated it so many times at the physical level. But once that conviction is there in the mind, that no, if I do pap, if I get angry,
Wow, 5 minutes of anger will take away my punya of 6 months of jap. This is a reality. This is a fact. 6 months of jap gone completely. 5 minutes anger. This is at the convictional level. Slowly, what happens? That conviction seeps in, and it will try to take out whatever is at my physical level or the mental level. Whatever wrong is there at the it will change it, but it takes time. Okay, so Supratin, is it clear? Hmm. Yes, Amma. Perfectly Okay. clear. Okay. So now we go to Viveka. So what is Vivek? See, Nitya and Anitya Vastu Vivek. Nitya and Anitya Vastu Vivekaha. To separate the Nitya from the Anitya is called Vivek. Simple definition. Nitya and Anitya Vastu, to separate them is called Vivek. Now we will try to understand this point. We try to secure ourselves. Through Arth Purusharth, we try to secure ourselves. When we are trying to secure ourselves, what are we actually trying to do? We are actually trying to get rid of that insecure personality within us. एक असुरक्षित व्यक्तित्व हमारे अंदर है जिसको हम निकालना चाहते हैं. We are trying to take out that insecure personality from us. We have already heard the limitations of Artha Purushartha. You all had written in the notes also. So when we are trying to actually gather the securities, whether it may be wealth, whether it may be house, whether it may be our vehicles, whether it may be anything, our relatives, our friends, everything. What are we trying to do? We are actually trying to get rid of that insecure personality within us. That insecure personality. Okay. What are we actually? We all are hidden mumukshus inside us. We are outside thing is trying to take out some of our hidden insecurities. What is the Kam Purusharth doing? Kam Purusharth is also taking away the pain that I don't want to take, don't want to undergo through non-enjoying. There's a personality in me who wants to enjoy. And that is why I want that personality that is craving for that joy to go away. And that time I become so happy. Actually, some or the other personality inside me I want to remove. And that is why I'm saying we are all hidden mumukshus. We want to remove something from our personality. That is why these are all the Purusharths that are working at our level, but we are not understanding actually where we are working at. We are wanting to remove something. See, last time I had told you that when we are looking at the enjoyers, bhokta, in the morning there came a bhokta of a tea, a cup of tea. Then came a bhokta of maybe breakfast. Then maybe came a bhokta of working. Then maybe came a bhokta of lunch. In this way, there are so many bhoktas, enjoyers in us. But there is someone in common who is remembering the first bhokta also. The bhokta went away. When I wanted tea, I had a cup of tea with some biscuits and all. After that, when the bhokta of breakfast came, at that time I didn't want the bhokta of tea. Or while I was having lunch, at that time I didn't want the bhokta of tea. It has gone already. So these are changing. The enjoyers are changing, but there is someone that is not changing, and that personality remembers all the bhoktas.
So this person, this seeker knows that there is an unchanging entity behind my changing entities. And I want to remove that anitya. I want to remove that anitya personality and I want to go to that nitya personality. I want to remove that. The hidden mumukshu, what is it trying to do? I want to remove that hidden, to remove that anitya personality, that changing entities, that changing personalities. And I want to come to some fixed personality, the nitya personality, permanent personality. I don't want to have a changing personality in myself. And if you are working at the level of world, if you are working at the level of sense organs, if you are working at the level of your body, all those things keep on changing continuously. And somewhere or the other, we have this tendency of having something permanent. But what is the paradox? Paradox is that from the unchanging, we want to have a, from the changing, we want to have an unchanging joy. Everything outside is changing. We want to have security from the changing things outside. This house that I made with so much of effort, with so much of money, that is changing continuously. It is deteriorating. But from that, I want a permanent joy, that it will give me a permanent solution, permanent security. Outside vehicles or outside money, everything, the relationships, everything is changing. But I want to secure myself permanently through them. This seeker is continuously trying to take his attention to the point that he is on a wrong boat. He is trying to take something out from the changing world. And that's not possible. That's not possible that we try to take out sweetness, sweet from lemon. If we squeeze the lemon, we cannot have sweet uh, syrup. Similarly, if we are going to this world is continuously changing. We cannot think about having something permanent from this world because it is changing and it will change. Change is the unchanging fact of this world. It cannot change. It has to change. The world has to change. And what does Vivek do here? Vivek is continuously trying to separate the Nitya from the Anitya. Nitya from the Anitya. Continuously it is trying to change. Take out. Why are you going after Anitya? Why are you going after security from the Anitya? It won't last forever. So we want liberation actually from the personality that I am not. We want everything permanent in this life, but through impermanent. That is a laughing stock. Okay. Now Dharma Purusharth, we saw about earth and calm. Is Dharma Purusharth permanent? Tell me, is Dharma Purusharth permanent? I want answers from you. No, Amma, not Why? permanent. Because dharma changes from situation to situation. There No, are different. like I am doing Havan, suppose, and the fruit of that Havan. Naturally, I'll get a big fruit. Hmm. I'm doing puja. I'm doing like Gupta Navratri is going on just now. I'm doing a lot of rituals. I'm doing a lot of the puja. I'm reading Durga Saptashati, fasting and everything.
Dharma Purusharth? Is it permanent? No, because because my amma, the thing which you said, it has a cause and effect relationship. So if I'm reading, if I'm reading, say Durga Saptashati, or I'm reading any religious book, or I'm doing fasting and everything, the effect will come, and the effect will come and it will go. Okay. Any other answer? Good. Any other answer? Himanshu, Sonia, Mitali? Sunil Das ji, Narayan ji? अम्मा, हाँ. धर्म धर्म अंतिम पुरुषार्थ नहीं है। धर्म हमारा ड्यूटी बताता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमको मदद करता है उस पथ पर जाने के लिए, मुमुक्षु तक प्राप्त करने के लिए वो हमको सहायता पहुंचाता है। Good, good, good. Himanshu, Sonia, Mitali? Think about it. कि हमें तो यही लगता है ना कि धर्म पुरुषार्थ जो भी है वो हमें धर्म करना चाहिए और इससे हमको परमानेंट सुख की प्राप्ति हो सकती है. सोमा, यू आर म्यूटेड. Yes, Amma. You saying something? No, I heard you. I saw your lip movement. That's why I thought you. Okay, then I'll give the answer. You all are correct. Everybody is right. See, the thing is that anything involving action cannot give a permanent result. Action, कर्म, कर्म की गति जो है, कर्म का जो फ्रूट है, फल आएगा, वो नित्य नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो अपने आप में ही अनित्य है. कर्म जो है, action has got so many factors. When we are doing some action, it has got so many factors. Can you tell me some of the factors when we are doing action? What are the factors? I keep on telling you all. Tell me. There are 9 or 10 factors that involve an action. Vitali. Narayan ji. Action. Action का फल, कर्म का फल कैसे आता है, कैसे निर्धारित होगा? आप लोगों को पता है, मैं अगर एक बताऊंगी तो आप सब बता देंगे. Intention. For how long we do it. How long we do it. Yes. फिर What is the situation? हाँ, situation, place, time, object, how we are using it, what is the expertise, And dravya. द्रव्य कैसा यूज किया है. Very good. Where, place. There are so many factors. How, with whose blessings we are doing. Are we an expert in doing that? और अपना भी हम लोग बहुत सारा हर एक सिचुएशन में अलग अलग निकाल सकते हैं. ये सारी चीजों को देखने के बाद में एक फ्रूट आता है. तो वो जो अनित्य है उससे हम लोग नित्य फल कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि नित्य फल मिलेगा. All these are impermanent. They vary from time to time. Our intentions may vary from time to time. How can these varying factors give a permanent fruit? Even if we do dharma for a long time, that will take us to some loka. What is the result of doing dharma? It will take us to some lok. Lok means what?
a periphery, a sphere, or a place where they give you a certain type of experience that is called loka. So it will take you to certain loka where there will be a joy for a long time, not permanent time. Permanent cannot be in the sphere of time, space, and object. Here in the world, we cannot call anything permanent. And when we are engaging these factors from the world, how can something permanent come to us? So even dharma purusharth also, when we are doing for a long time, it will give us a low for a longer period, but it won't last forever. It will also have a beginning and an end. Whatever has begun will have an end. So in this way, what will happen? That this person who is a seeker of truth, he will try to find out that why my dharma purusha, I have to get over this dharma purusharth also. That is why when a seeker comes to a certain level, वो धर्म को भी छोड़ देता है. उसको लगता है ये धर्म भी जो है मेरा, ये मुझे आगे जाने में बाधा है. It is an obstacle for me to reach that permanence. That is a very higher stage. Huh? We all at this level cannot do that. At least we try to keep ourselves on the path of dharma. Because we need अंतःकरण शुद्धि also. क्योंकि धर्म से ही हमारी अंतःकरण शुद्धि होती है. अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी तो we cannot catch that knowledge. We cannot have punya. We cannot have the situation where we can come and study. Our mind will react. ये धर्म पुरुषार्थी है जिससे हम लोगों को पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ है. सबका पुण्य है हमारा. अगर अभी हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, वाईफाई चला जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, भूमिकंप आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हम लोग सब उठ के भागेंगे. फॉर दैट वी नीड धर्म पुरुषार्थ. हम लोग अंतःकरण शुद्धि करें, बहुत पुण्य बढ़ाएं अपना. उसके बाद में दैट विल गिव अस अ सिचुएशन वेयर वी कैन राइज अबव. वो पोल वॉल्ट होता है ना, then we are doing pole vault. Ultimately that runner, he's running and ultimately he leaves that pole also. He jumps on that side and he will leave that pole. So at last in the end what happens, that seeker has to leave that dharma also. But initially when he is doing nitya vivek, then at that time he feels that no, dharma will give me this situation, whatever I want. But ultimately, I have to leave this dharma also. Now he comes to Moksha Purusharth. This is what is called doing Nitya and Anitya Vastu Vivekaha. He wants to seek that permanent I in himself that does not die at all. That personality that does not die, that is not changing at all with the changing situations outside. He feels I don't belong to this place at all. My address, we write our permanent address. This. यहाँ पे हमारा है downtown में. This is the house number, lane number, by lane number. This is my permanent address. The seeker knows that here nothing is permanent. This is not my permanent address. रहना नहीं, देश बिराना है. हमारा तो permanent address कहीं और है. Continuously he keeps thinking about it. For what am I doing? क्यों करना है? ऐसे क्या मिलेगा? This is not escapism. बार बार हमको ये याद रखना चाहिए. कई लोग बोलते हैं कि आपने घर छोड़ दिया है, आपने ये कर दिया है, आपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा है, आप तो भगोड़े हैं, आप भाग गए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. When that maturity level comes, this world is very suffocating for this personality. We won't understand till we reach to that level. And our Shastra has given that freedom for a seeker to go, to leave. This is not escapism. और इसमें कई जन्म लग जाते हैं
come to that position. ये शुरू कहाँ से होता है? विवेक. We try to discriminate between permanent and not permanent, between true and between false, between the enjoyers inside me and that permanent witness that is witnessing everything. Pairs of opposites. It's trying to discriminate everything. Where is my seat at present? Where am I sitting? If I am sitting in the garbage bin, the garbage will continuously fall on my head. I can't expect that they will shower some nice fragrant perfume on me. So try to understand that we have to elevate ourselves from the present sitting arrangement to a higher sitting arrangement where we can directly visualize with clarity what is this world, what am I, what is permanent, what is impermanent. That clarity in vision has to be there. And Vivek will help us in doing that. Vivek is not objective achievement. It is subjective realization. बाहर के विषय की प्राप्ति नहीं है विवेक कि कुछ मैंने विवेक करके कुछ बाहर प्राप्त कर लिया, नहीं. दिस इज सब्जेक्टिव रियलाइजेशन कि हमको अध्यात्म में अंदर में मन में वी हैव टू रियलाइज समथिंग. This is called Vivek. Now, this Vivek is the capacity of Vivek is in somewhat quantity measures in animals also. In animals, you all also must be having pets up in your house. You also must be, if you give them something to eat that they don't like, they will just sniff and go away. Or if you want to make them eat some medicine, especially, oh my God, it is such a tough job. Because they can smell everything. Even if you give something non-edible to a cow, it won't eat. It won't eat. Like if you give non-veg, you cook nice non-veg and you give it to the cow, it won't eat. There, all the sparrows, birds, they also have their own food. Animals, plants, everything, they have that sense of discrimination. This discriminative faculty is very developed in human beings. And this should be utilized by us. Anybody who is good in any subject, who is an expert, why we call him an expert in any subject? Because he has developed this faculty in him. Whom do we call a good musician? Subhashish? Whom do we call a good musician? कौन अच्छा म्यूजिशियन किसको बोलेंगे बताओ? फट से पकड़ लेगा वो कि अरे ये राग जो है भैरवी में इसने कहाँ से ये तीव्र माँ लगा दिया, कल्याण ठाट आ गया. अम्मा वो जो कंटिन्यूअस वो श्रवण करने से ही होगा. हाँ. और सीखना तो पड़ेगा. तभी वो बता पाएगा कि कैसे हुआ ये. उसने डेवलप किया है ना, वो कर करके उसने डेवलप किया हुआ है उस चीज को कि ना अब उसके मन में फट से वो कैच कर लेता है कि ठीक नहीं है. वो रियाज करके विजन डेवलप करना है वो ही. बिल्कुल. वो जो टी टेस्टर्स होते हैं पता है तुम लोगों को? यहाँ पे मैं किसी के घर पे गई थी जिनका टी का बिजनेस है, तो उन्होंने मुझे दिया कि आप भी चाय पी के देखिए. एक चाय जो था वो कितना 80,000 रुपीज किलो, एक 1 लाख रुपीज किलो, ऐसे से चाय थे. उन्होंने बना के ऐसे मेरे लिए रख दिया था छोटे छोटे कप्स में इतने में. अम्मा मैंने कहा मैं चाय नहीं लेती हूँ. नहीं 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 ये देखिए इतना. अरे मैंने कहा नहीं लेती हूँ. वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ था,
वो चाय टेस्ट कर करके उसकी ब्रांडिंग कर रहा था। वो ऐसा नहीं कि पूरा चाय पी जाता है, तो इसको तो कितनी चाय पीनी पड़ती होगी सुबह से। वो सिर्फ जीभ पे लगाते हैं और फिर वो एक स्पिटून रहता है, उसमें वो स्पिट कर देते हैं। पर वो जो जीभ पे लगा के उसने वो डेवलप किया हुआ है। कोई कोई खाना जो है हम लोग बनाते हैं, कुछ किसी किसी को आप कुछ भी दे दो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या है, नमक है नहीं है, ज्यादा है, टेस्ट है नहीं है। किसी किसी का बहुत क्रिटिकल रहता है कि हाँ हाँ नहीं, किंतु इसमें तुमने ये बहुत अच्छा बना है, किंतु इसमें तुम ये भी डाल सकती थी। और उसने वो एक्सपर्टीज डेवलप की हुई है। इस कैसे डेवलप की, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपर्टीज, जिसको तुम शुभाशीष बोल रहे हो कि उसने किया हुआ है, क्या है इसकी डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट है किसी भी चीज में, आर्ट में कोई एक्सपर्ट है, कोई डांस में एक्सपर्ट है, किसी ने कुछ फूल बनाया या फिर ऐसे ऐसे किया, उसको देख के हाथ मुद्रा देख के समझ में आ जाएगा कि ये भरतनाट्यम इसने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है। उसने उसकी डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है। अगर वो एक्सपर्ट है कहीं पे, तो फिर उसने विवेक किया हुआ है। ठीक है, तो ये संसार में भी लागू होता है, यहाँ पे भी लागू होता है। वो बार बार सोचता है कि ये बॉडी जो है मेरी, ये तो अनित्य है, इट विल डाई, इससे मैं परमानेंट जॉय कैसे लूं, ये तो चला जाएगा, एक दिन रहेगा एक दिन नहीं रहेगा। तो अंदर हमारे एक इम्परमानेंट आई है, वो इम्परमानेंट आया नित्य अहम जो है बाहर के चीजों का सुख चाहता है, दो अनित्य चीज मिलके एक नित्य जॉय चाहती है। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे अंदर में एक अनित्य पर्सनालिटी है, एंजॉय जिसको हम बोलते हैं, बार बार चेंज हो रहा है जो, और दूसरी जो पर्सनालिटी है वो चाहती है कि मुझे बहुत, मेरा कल पेपर में नाम आना चाहिए। वहां पे हम लोगों ने एक वैक्सीनेशन कैंप किया था, फोटो वोटो भी लिया था, बीच में मैं खड़ा हो गया जाके, और मेरा जो फोटो है वो पेपर में आना ही चाहिए। अगले दिन हम पेपर में देख रहे हैं, पूरा पेपर छान मारा, कहीं पे भी वो फोटो नहीं आया, न्यूज भी नहीं आया। फिर देखा कोने में एक न्यूज है और उसे फोटो नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर में दो अनित्य चीज मिलके बाहर में नित्य फ्रूट, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब हमेशा परमानेंट आनंद मुझे मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सीकर जो है उसका ध्यान वहां जाता है और वो कंटिन्यूअसली इन दोनों चीजों को अलग करता रहता है। इसको बोलते हैं हम नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दोनों को सेपरेट करना, विवेक विच धातु है वहां पे, इंग्लिश वाला विच नहीं विच धातु मतलब पृथक करने, सेपरेट, टू सेपरेट। तो वहां पे विच धातु, विचर धातु है, उस धातु का मतलब होता है टू सेपरेट। ये सेपरेट करनी है यहाँ पे। वो ये सारी ट्रेनिंग उसकी माइंड को देता रहता है कि मुझे जो है यहाँ पे बहुत डीप परमानेंट जॉय चाहिए, जैसे ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल जॉय नहीं चाहिए। तब वो बहुत से प्रमाणों को यूज करता है, हमारे शास्त्र को यूज करता है, खुद के अनुभवों को यूज करता है, बार बार देखता रहता है कि यहाँ पे क्या नित्य है क्या अनित्य है, उसको कंटिन्यूअसली सेपरेट करता रहता है। इसको बोलते हैं हम नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्यों हम लोग बाहर से जो हम लोग किसी से रिस्पॉन्स चाहें, हम क्यों शांत नहीं बैठ सकते, हमारे अंदर क्यों गुस्सा आता है, हमारे अंदर क्यों फ्रस्ट्रेशन है? He continuously questions himself. Why are we expecting so much from somebody who cannot fulfill my expectations? उसकी भी limitations है, it's all right. ये वो जब सोचता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तब उसका मन जो है वो शांत हो जाता है। आज हमारा समय पूरा हो गया, नहीं तो मैं दूसरा विराग भी लेने वाली थी। अच्छा, एनी क्वेश्चन? तुम लोग के कोई क्वेश्चन है, पूछो। हिमांशु, समझ में आया? अम्मा, हाँ आपने जो पैराडॉक्स के बारे में बताया था,
हाँ, कि जो हम लोग अनित्य है, अनित्य से हम लोग नित्य सुख चाहते हैं। एम आई करेक्ट? यस। तो वो पैराडॉक्सिकल है। तो प्रश्न ये उठता है कि वो नित्य वस्तु है क्या? वो नित्य वस्तु तो मटेरियल नहीं हो सकती, तो वो है क्या? नित्य वस्तु जो है, वो जो विटनेस जिसको हम साक्षी बोल रहे हैं, अभी इतना ही समझो, वो जो साक्षी हम बोल रहे हैं, जो मैंने कहा कि सारे भोक्ताओं को देख रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तुमको याद है तुम जब फर्स्ट डे स्कूल गए थे? याद है? तुम लोगों को याद है किसी को फर्स्ट डे तुम्हारा स्कूल का? फिर हाँ जब मैम। तुम लोग स्कूल में कभी टीचर ने मार मार खाया था, या फिर स्कूल क्लास से बाहर निकाल दिया था, फिर बदमाशी की थी, फिर कभी हम गिर गए थे, चोट लगी थी, घर पे आके माँ ने और पिटाई की थी, कैसे गिर गए। फिर कभी हमारा बहुत अच्छा नंबर आया, हम लोग को बहुत अच्छा फेलिसिटेट किया गया कहीं पे, या फिर कहीं पे मेरा मन बहुत, ये सारी चीजें याद है। फिर चलो हम लोग कॉलेज गए। कॉलेज में भी अब ज्यादातर तो तुम लोग कॉलेज वाले ही हो। कॉलेज में गए, कॉलेज में भी हमको याद है, आज का दिन भी मुझे याद है। वो सारे जो भी पर्सनालिटीज हैं, वो सारी पर्सनालिटी तो चली गई, बट देयर इज समवन हु इज रिमेम्बरिंग ऑल दोज पर्सनालिटीज, दैट हैज नॉट चेंज्ड। वो तो अगर वो भी चेंज हो जाता इन सारी पर्सनालिटीज के साथ, who would have remembered those incidents, those experiences? If I am remembering today something, some of my experiences, there must be somebody who is unchanged inside me. There is an unchanging personality that has seen everything, that has experienced everything, and he is telling me that I am the one who has witnessed everything. वो बदलता नहीं है। कल भी था वो, जब हम बचपन में थे तभी भी था वो, आज भी है वो, आगे भी रहेगा वो जो एक विटनेस है, वो सारे के सारे चेंजेस को अपने ऊपर देख रहा है, दैट इज दैट अनचेंजिंग पर्सनालिटी। वो नित्य है। हमने क्या किया है, अनित्य को और नित्य को मिला दिया, और ये मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग ऑयल और वाटर को मिला नहीं सकते हैं, जैसे हम स्पेस को गीला नहीं कर सकते हैं, वैसे ही नित्य और अनित्य को कैसे मिल सकते हैं? ये चीज जो है विवेक करते हैं, ये पैराडॉक्स है कि हम लोगों ने अननोइंगली, हम किसी बाहर की चीज से परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी, उसके में भी एक्सपायरी डेट होती है, वो भी परमानेंट नहीं है। सब चीज में जो भी चीज मैन्युफैक्चर हुई है, वो चीज का अंत भी होगा यहाँ। इसको बोलते हैं हम विवेक करना। ठीक है? अम्मा, हाँ सॉरी, फिर एक प्रश्न आ गया। हाँ, बोलो। अम्मा, अ, बचपन से जब मैंने जन्म लिया था, जन्म के बाद मेरा एक ईगो आया था, जो बचपन में मैं जैसा था, जब मैं एक दिन का शिशु था, तब मुझे कुछ तब मुझे कुछ मालूम नहीं था। आई वॉज वेरी मच ओब्लिवियस। और अभी मुझे अभी अभी 25 साल का हो गया हूँ, एक एक्सपीरियंस और बहुत सारे पर्सनैलिटीज गए हैं। तो उसके बीच में जो जो एक्सपीरियंसेस है वो मुझे याद है, वो पर्सनैलिटीज मुझे याद है। तो वो तो मेरी मेमोरी में है। तो उसके अंदर में वो परमानेंट पर्सनैलिटी कौन है? मेमोरी जो है ना, ये उस पर्सनालिटी पे, जो हमारा विटनेस है, उस पे सुपर इम्पोज है। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आगे आगे धीरे धीरे मिलेगा, जब हम लोग पंच महाभूत, फिर हम लोग पंचीकरण, अपंचीकरण, ये सब पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि वो जो परमानेंट पर्सनालिटी है, उस पे ही ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती है। मेमोरी उसी पे दिखाई देता है। मेमोरी करके जो भी चीज है, वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण चतुष्टय का, चित्त का, मेमोरी।
चित्त नहीं, चित्त डबल त। चित्त। उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वहां पे हमारी मेमोरी स्टोर्ड रहती है। और वो किस पे दिखाई देता है, उसको सेंशियंट करने वाला कौन है, क्योंकि ये सब तो जड़ है, तो सेंशियंट करने वाला वो विटनेस है, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे साक्षी बोला है, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वही एक चीज है उसको सेंशियंसी देती है। अभी तो बस इतना ही जाना, नहीं तो और सेंशियंसी करती अम्मा हूँ। चेतनता, सेंशियंसी। चेतनता जड़ है, सारे पंच महाभूत जड़ हैं इन इटसेल्फ, और उसमें भी हमको थिंकिंग कैपेसिटी जब आ रही है, दिखाई दे रही है, सेंशियंसी है। इसका मतलब है वहां पे आत्मा या फिर हम साक्षी, उसी के कारण वहां पे सेंशियंसी दिखाई दे रही है, उसने बोरो किया हुआ है। इसीलिए तो ये सब मिक्स है, और वो मिक्स हो नहीं सकता है। कैसे ये मिक्स हो गया? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, इसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये मृषा है, ये फॉल्स है, और फिर भी इसको छुड़ाने में ही इतना कठिनता है। जैसे हम लोग कटहल को, हाथ में कटहल अगर उसका लग जाए कितना मुश्किल होता है, हाथ में पेंट लग जाए, गीला पेंट, कितना मुश्किल होता है छुड़ाने। अरे उस दिन वो फेविक्विक था ना, फेविक्विक का वो मैं चिपका रही थी, कुछ उंगली चिपक गई। इतना स्ट्रॉन्ग वो एडिसिव है, इतना, इतनी सी बॉटल होती है उसकी, उसको तोड़ के लगाओ और वो कुछ भी करो, हाथ में नहीं चिपकना चाहिए। 2 दिन तक वो हाथ में से निकालने में टाइम लग गया। ऐसे ही है छूटत कठिनाई, इसको हम लोग जन्मों तक छुड़ाना चाहते, क्योंकि इतने जन्मों से हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, मिक्स करते रहे, मिक्स करते रहे, दाल चावल मिक्स हो गया है, उसको अब हटाओ, अलग अलग करो, विवेक विवेक करो, विच धातु से अलग अलग पृथक करने करो, करते रहो करते रहो, तब जाके ये कहीं अलग होगा। नहीं तो इतनी मुश्किल। और प्रॉब्लम बोला, हमको तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगता नहीं है, हमको तो अच्छा ही लगता है, सब मिक्स है, आनंद भी मिल रहा है। प्रॉब्लम तब होगा जब वहां से आपको दुख प्राप्ति होगी, जब घर में कोई बेरीवमेंट होगा, जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, जब अपमान मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुमको मिलते जाएंगे, कहाँ पे है, कैसा है। ये जस्ट हम लोग ने अभी स्टार्ट ही किया है। ओके अम्मा। ठीक है, खत्म करें। हिमांशु, समझ में आया? तुम्हारा फर्स्ट क्लास था। सोनिया, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? हाँ, मुझे ये पूछना है हाँ कि आपने बोला कि अ सीकर इवन लीव्स द धर्म, हाँ, सीकर नहीं, उसका क्या, सीकर। ही हाँ, लीव्स द धर्म, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि आई एम लिविंग द धर्म, मतलब? ये एकदम हाईएस्ट स्टेज पे जाके, हाईएस्ट हम्म, स्टेज पे जाके, जब वो सारी चीजों को छोड़, धर्म का भी पाथ छोड़ देगा। जैसे हम लोग ऋषभ देव जी का एग्जाम्पल लें, ऋषभ देव जी ने सब कुछ छोड़ के लास्ट में वो एक नोमैडिक की तरह में वो रहने लगे। उन्होंने कपड़ा भी छोड़ दिया पहनना, उन्हें खाना पीना भी लेना छोड़ दिया। ये हाईएस्ट लेवल पर है कि वहां पे मैं अगर धर्म का भी काम करता हूँ तो वो मुझे किसी एक बड़े लोक में लेके जाएगा। आई हैव टू गो देयर एंड एंजॉय। तो वो प्रारब्ध के वश में छोड़ के सब कुछ, अपने प्रारब्ध के छोड़ कि जब तक ये प्रारब्ध है शरीर का, फेट है शरीर का, तब तक ये शरीर टिका रहेगा। बाकी मुझे धर्म का भी काम नहीं करना है, बिकॉज दैट धर्म विल ऑल्सो बाइंड मी टू टेक अनदर बर्थ। आई डोंट वांट रीबर्थ। ये एकदम हाईएस्ट कैटेगरी पे है सोनिया, इसको हम अभी अपने इस पे नहीं ला सकते। हमको अभी धर्म करना पड़ेगा, हम धार्मिक मार्ग पर रहें। पर ये सीकर जो है, ये विवेक करता रहता है कि वहां पे जाके मैं ज्यादा धर्म करूंगा, या फिर धर्म भी हम लोग करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं, तो वो जो सिचुएशन मुझे मिलेगी वो भी मुझे बाइंडिंग लगेगी। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुंदर सा मुझे याद आ रहा है। जब मनु शतरूपा रूप से दशरथ जी, मनु शतरूपा रूप से उन्होंने भगवान की आराधना की थी, और उनको भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुमको, बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, और ऐसा ऐसा चाहिए। क्या है वो लाइन? फनी बिनु, फनी बिनु मनी, जिमी जल बिनु मीना, तिमी मोहि जीवन
तुम्ही अधीना। ऐसा मेरा ऐसे मेरा अटैचमेंट हो आपसे, मांग रहे हैं वो, धर्म का फल मांग रहे हैं। मेरा ऐसा अटैचमेंट हो आपसे कि जैसे फनी जो सर्प होता है उसकी मणि निकालने से वो छटपटा जाता है, या फिर जैसे जल में से मीन को निकाल ले मछली को तो वो छटपटा जाती है, वैसे आपके बिना मेरा प्राण निकल जाए। और वही हुआ। फिर क्या हुआ, दशरथ जी का पूरा जीवन आया। दशरथ जी के जीवन में अभी भी उनके मन में से गृहस्थ आश्रम के प्रति, काम के प्रति, बच्चों के प्रति वो सब अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था। अल्टीमेटली वो लास्ट डे पे कैकेयी माँ के पास में गए। क्यों गए? उनको बताने के लिए। अगर उनके मन में उनके प्रति कोई पैशन नहीं रहता वो वहां जाते ही नहीं। वो तो भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके थे पिछले जन्म, धर्म का फल भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। पर फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं पे एक आसक्ति थी, जिसने एक परिस्थिति क्रिएट कर दी उनके लिए कि उनके वाइफ ने, सबसे लाडली वाइफ ने, सबसे प्रिय वाइफ ने, सबसे सुंदर वाइफ ने उनके साथ में धोखा किया। उनके ही वरदानों को उनके अगेंस्ट पे यूज किया। मेरा पुत्र बने राजा और ये 14 साल के लिए राम वनवास चले जाए। जैसे ही ये हुआ उनका सारा का सारा जो नॉलेज था, ज्ञान था, विवेक था, वो सामने आ गया कि मैंने क्या कर डाला, मैंने क्या मांग लिया। उस समय जाके वो ये वाले सीकर, ये विवेक आया, उनका जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि कैकेयी तुम मेरे आंख से ओट होके बैठ जाओ, दूर चले जाओ, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। सबसे प्रिय जो था उसको उन्होंने हटा दिया राम के कारण। राम और भी प्रिय थे दिखने के लिए, ऊपर से सुपरफिशियल उनका एक प्रेम था कैकेयी माँ के साथ में, पर अल्टीमेट प्रेम किसके साथ था? राम जी के साथ। उन्हें कहा कि नहीं, राम जी का प्रेम जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मेरा अपना प्रेम जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वहां पे मैं कैकेयी को या फिर मेरे वासना वाले ग्रसित प्रेम को मैं हटा दूंगा, वहां पे वासना नहीं चलेगी। मैं वहां पे वो धर्म को भी छोड़ दी और फिर परमानेंट सुख के प्रति वो चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान ने उनको खुद का पद दिया, मतलब परमानेंट अपने धाम में वो लेके गए। उन्होंने अपना सुख दे दिया, उनको ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दिया। ये होता है। वो करते 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 समझ में आता है। कोई उपासना करते हैं कि मेरी परिस्थिति अच्छी बन जाए। परिस्थिति जब अच्छी बन जाती है तब उसको वही धर्म जो है लगता है कि मैंने क्यों ये मांगा कि मेरी परिस्थिति अच्छी बन जाएगी। ये अच्छी परिस्थिति भी मेरे भगवान के तरफ जाने में मेरा हिंड्रेंस बन गई। अब हम लोग ये बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को देखेंगे या फिर हम लोग बहुत नेताओं को देखेंगे जिनके पास में बहुत पुण्य है, अलग तरीके का पुण्य है। धार्मिक पुण्य अलग तरीके का होता है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल पुण्य है अलग होता है। वो लोग ऐसे करके हमारे जैसे सत्संग कर पाएंगे? वो लोग खुल के आके, हम लोग सत्संग कहीं पे भी जाके अटेंड कर सकते हैं, हम लोग भीड़ में कहीं पे भी जा सकते हैं, हम लोग बाके बिहारी चले जाएंगे, हम लोग कहीं पे भी चले जाएंगे, वो लोग जा पाएंगे इस तरह से हमारे जैसे? वहां पे वो पुण्य जो है, धर्म जो है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा स्पिरिचुअल पाथ में। है उनका पुण्य बहुत, धर्म किया है उन्होंने। एट अ सर्टेन लेवल वो धर्म भी जो है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस बनता है। और वो ये जो पर्सन है वो देखता है, वो विवेक करता है कि मुझे धर्म से भी पार एक दिन जाना है, आज नहीं, एक दिन जाना है। अभी तो मुझे धर्म के पाथ पर रहना जरूरी है, मेरे अंतःकरण शुद्धि के लिए जरूरी है, मेरे आगे के लिए जरूरी है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट, आई नीड इट। बट आफ्टर आई रीच अ सर्टेन लेवल, आफ्टर दैट आई डोंट नीड दैट धर्म ऑल्सो, आई एम गोइंग टू लीव दैट धर्म ऑल्सो। ठीक है सोनिया? अम्मा हाँ सॉरी, एक और प्रश्न आ गया। रुको रुको, तो आप सुप्रतिभ रुको, सोनिया से पूछने। सॉरी, पर सोनिया हमें पता कैसे चलेगा कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं? हाँ, ये अपने आप पता चल जाता है। दशरथ जी को कैसे पता चला? ये अपने आप पता चलेगा जब हम उस लेवल पर रीच करेंगे ना, हमें अपने आप पता चलेगा। कैसे तुमको समझ में आएगा? हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं, कैसे समझ में आएगा? हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, सपोज कि हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए हैं रास्ते में, और पहुंचने पर अपने आप पता चल ही जाता है। वहां पे हमको दिखेंगे बोर्ड, दिखेंगे साइन बोर्ड, दिखेंगे। हमारा dissatisfaction with the present level वही बताएगा कि we are not meant for this anymore. You won't be very satisfied with dharma.
करके भी तुमको लगेगा कि क्या पाया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हवन किया मैंने, सुबह से शाम तक हवन किया, बहुत तरह तरह के हवन होते हैं, पता है? साउथ इंडिया में जाओ, वहां पे वो लोग पूरा कपड़ा खोल के उसमें घी मलते हैं और फिर बड़ा बड़ा वो सब करके वो हवन दिन दिन भर वो लोग हवन करें, और गर्मी में बैठे रहेंगे, इस तरह से करेंगे। और कहीं पे भी खुजली हो तो भी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि टच कर दिया अगर आपको तो आप अशुद्ध हो गए अपने आप को ही। वो सब इतना कर्मकांड बहुत रिचुअलिस्टिक और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। सब कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अल्टीमेटली जब लगने लगे कि पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया, खुद को लगेगा ये सबसे मैंने क्या पाया, इससे अच्छा है मैं भगवान को प्रसन्न करता, या फिर मैं कुछ ज्ञान की बात करता, मेडिटेट करता शांति से बैठ के। तो खुद पता चलता है उसमें। We are very dissatisfied with that present situation, with the action. मन बोलेगा, जब मन परिपक्व हो जाएगा, मन बोलेगा। जैसे आम जो है पक जाने पर पेड़ पर नहीं टिका रहता है, वो गिर जाएगा। वैसे ही जब सिचुएशन राइट हो जाएगी, हम लोग उस सिचुएशन में रह ही नहीं सकते, हम लोग वहां से निकल जाएंगे। मन डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तड़पेगा वहां से निकलने के लिए। पागल, हम लोग घर से निकलते हैं ना, पागल रहते हैं घर से निकलने के लिए। हमको हर एक चीज में बंधन लगता है, कोई कुछ बोल देता है बंधन लगता है, पूजा ना करने को बोलता है बंधन लगता है, हमको पागलपन हो जाता है कि यहाँ से निकलो कुछ भी करके। वो एक स्थिति है, वो खुद को ही समझ में आएगी, वो ऐसे नहीं समझ में आएगी। ठीक है सोनिया? हाँ ठीक है। सुप्रतिम? जी अम्मा, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली मुझे एक ये क्वेश्चन आया था कि जैसे आपने दशरथ जी का एग्जाम्पल लिया था, तो मेरे मन में तब ये एक प्रश्न आया कि हम जैसे हम जो जो आए हैं आपसे सीखने, हम मैक्सिमम 90% ऑफ अस आर गृहस्थ। तो गृहस्थ लोग हम जैसे हैं, हमारे अंदर में एक ऐसी वासना है कि हम लोग को संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, नित्य भी चाहिए, अनित्य भी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में एक गृहस्थ आश्रम में जूझा हुआ व्यक्ति करे क्या? और दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों ने राजऋषि जनक के बारे में बहुत सुना है कि वो दोनों दोनों साइड को बैलेंस करके चलते थे, संसार को भी रखते थे, साथ में ईश्वर की उपासना भी करते थे, ब्रह्म को भी जानते थे। तो ये कैसे, ये स्थिति कब आएगी? देखो, नित्य के साथ में अनित्य को हम कभी बैलेंस नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि एक चीज जो है ही नहीं, वो जो उस दिन क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मनानी ने, शायद मनानी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये इग्नोरेंस कब आया, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? इग्नोरेंस डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए आया कैसे ना, उस सर्प पे, जैसे मेरा प्रश्न था वहां पे कि जब से वो सर्प दिखने लगा रज्जू पर, the snake was seen on that rope, तब से वो इग्नोरेंस भी हम पे आया, क्योंकि वो डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। तो जो अनित्य चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो तुम नित्य से मिला के तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमको दोनों ही चाहिए? अब भी मैंने तुम लोगों को बोला कि वी आर ऑल हिडन मुमुक्षुस। हम लोग को तुम जो बोल रहे हो संसार में, गृहस्थ आश्रम में जाना है, गृहस्थ से रहना है, संसार में रहना है, वो सब जो पर्सनालिटी है, वो इट इज ट्राइंग टू रिमूव समथिंग इम्परमानेंट फ्रॉम योरसेल्फ। बाहर की कोई भी वस्तु से जो तुमको लग रही है कि नित्य है बट वो अनित्य है, उससे तुम अंदर की कोई एक अनित्य पर्सनालिटी को हटाना चाह रहे हो, और तुमको लग रहा है कि वो परमानेंट होगा। तुमको लग रहा है कि राजर्षि जनक जी ने दोनों चीजों को बैलेंस करके वो चले, ऐसा नहीं है, गलत कन्विक्शन है ये। उन्होंने अपने एक पर्सनालिटी को, जो नित्य पर्सनालिटी है, उसको इतना बढ़ाया कि बाकी सब अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। वहां पे बैलेंस क्या करें? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको हम बैलेंस क्या करें? रेनबो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको हम नहीं बोल सकते अरे आज तो टेढ़ा है एंगल यार, इसको एंगल को ठीक करो, उधर से सीढ़ी लगाओ, तुम इधर से सुप्रतिम तुम चढ़ो, उधर से मैं चढ़ती हूँ, उसको ठीक करो एंगल। दैट डज नॉट एग्जिस्ट।
वो तो हमारे विजन का एक एरर है कि वो इस तरह से दिखाई दे, एक एंगल से दिखाई देगा, दूसरे एंगल से नहीं दिखाई देगा। तो हमारा जो एंगुलर विजन है उसको जब हम ठीक करते हैं तब अपने आप एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस। तब तुम संसार में रहो, तुम अध्यात्म में रहो, तुम गृहस्थाश्रम में रहो, तुम अपनी वाइफ के साथ में, उसके साथ में रिलेशनशिप में रहो, तुम्हारा वो विजन जाएगा नहीं। तुमको यही लगेगा कि ये भी तो ब्रह्म है, सब कुछ यहाँ पे ब्रह्म ही है, मेरा ही रिफ्लेक्शन। ये तुम आगे और हम लोग आएंगे तब जॉय सुख किसको बोलते हैं उसमें और आएगा। ये बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग तो हम लोग दो चीजों में करते हैं ना, जो दो रियल चीजें हैं। या हम अनरियल और रियल में कहाँ से बैलेंस करेंगे? अनरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका बैलेंसिंग होगा कहाँ से? उसको तो वेट ही नहीं है, इट्स नथिंग। जब हम इस विजन को ठीक ठाक बढ़ाएंगे, ठीक ठाक बनाएंगे, इसको, हम जो रियल पर्सनालिटी है हमारी, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, हम कौन है, उसको हम लोग जानेंगे, अपने आप बाहर की सिचुएशन जो है वो ठीक होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, हम इसको भी तो अनित्य बोल के देखते हैं, हमारा व्यवहार ठीक होने लगता है। हमको लगेगा कि हम क्यों फालतू में इतना झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ तो यहाँ पे अनित्य ही है, क्यों हम इस चीज को, छोटे से चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों हमारा दिमाग इतनी सी चीज पे खराब हो रहा है। नेचुरली हमारे व्यवहार शुद्धि होने लगती है। हमको बाहर से कोई चीज नहीं मिली सपोज, या फिर बहुत टफ पेपर था, या फिर कुछ ऐसा था, हम लोग के लिए का चैलेंज है ये, कोई बात नहीं, तब जाके हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अपने आप हमको एक बूस्टअप अंदर से मिलता रहेगा, मैं कौन हूँ, इन सब चीजों से मुझे अफेक्टेड ही नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, आत्मा हूँ, ये सब चीजें मेरे ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, मेरे कारण ही एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने इनको चेतनता दी हुई है, ये नथिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप सब चीजें बैलेंस होगी। हमको वो विजन जो है हमारा बढ़ाना पड़ेगा, वो विजन के साथ में जब हम संसार में, और यही गुरुकुल में किया जाता था पहले, यही सारा नॉलेज पहले दिया जाता था, उसके बाद बोला जाता था कि तुम संसार में जाओ, अब काम करो। विवेकानंद स्वामी, गुरुदेव हमारे चिन्मयानंद जी, और भी कई बड़े बड़े महान संत हुए, कितना काम किया उन्होंने, हम लोगों से ज्यादा काम किया, हम तुम्हारी लैंग्वेज में बैलेंस रूप से काम किया। हम लोग नहीं, इस जन्म में भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी को देखो आप, 32 ईयर्स लाइफ में तो पूरा का पूरा कितना कर दिया, हम लोग तो 5-6 जन्म लेके भी उतना काम नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर जी ने, जो महाराष्ट्र के संत हुए, 21 साल की उम्र, सब कुछ कर लिया, क्योंकि उनका विजन वैसा था। जब हम उस विजन को डेवलप करेंगे, अपने आप हमारी दूसरी भी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। पर अगर हम दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये दो चीज, हम किस चीज को बैलेंस करें, जो है ही नहीं उसको हम बैलेंस कैसे करें? है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि तुम बैलेंस करके चल रहे हो, पॉसिबल नहीं है, परेशान हो जाओगे, क्योंकि दो नाव, तुमने दो अलग अलग नाव पे पांव रखा हुआ है, एक नित्य है और एक अनित्य है, उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, एक डूब जाएगा, मझधार में लटक जाओगे। इसलिए एक पर्सनालिटी जो तुम्हारी है नित्य वाली, उसको जब तुम डेवलप करोगे, वो अनित्य पर्सनालिटी अपने आप बैलेंस हो जाएगी, या तो डूब जाएगी, या तो फिर ऐसे दिखाएगी कि वो है पर वो नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ क्लियर है, क्लियर विजन। ठीक है? ओके ठीक है, लेकिन ये ऐसा धारणा बहुत टफ होगा करना। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, एक चीज है डिफिकल्ट और एक चीज है नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तुम कौन सा करना चाहोगे? डिफिकल्ट। यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि तुम संसार में जाओ और उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, कोशिश कर लो, देख लो, अपने एक्सपीरियंस से बैलेंस करने की कोशिश करो, वापस तुमको घूम फिर के यही आना होगा। यस।
गीता में भी भगवान ने इसीलिए बैलेंस करने के लिए बात नहीं की, डायरेक्ट उन्होंने अशोच्यानन्वशोचस्त्वम ज्ञान की दृष्टि दी अर्जुन को। बोल सकते थे ना अर्जुन को, अर्जुन तो घोर संसारी, श्री कृष्ण भगवान महागृहस्थ है, हम लोग जैसे ऐसे गृहस्थ नहीं है, एक एक वाइफ, दो दो वाइफ, ऐसे नहीं, 16,108 वाइफ, उनसे बड़ा गृहस्थ और कौन होगा। वो जब ज्ञान की दृष्टि को बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान की दृष्टि से आओ ऊपर उठो, प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासूर गतासूर से नानुशोचन्ति पंडिता, तुमको पता नहीं है पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, जिनके प्राण है नहीं है उनके लिए प्रज्ञावादांश से, जैसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत पंडित हो, डांट दिया। तो बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, बैलेंस मत करो। और राजर्षि जनक ने बैलेंस नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो ज्ञानी है, ज्ञान जब राजा बनेगा तो राजर्षि बनेगा, ज्ञानी जब मंत्री बनेगा तब वशिष्ठ मुनि बनेंगे। पंचेते ज्ञानी ज्ञानी न समा है ना, वो जनकौ राजानो, एक श्लोक आता है, अब मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। वशिष्ठ कर्म कर्ता च, वशिष्ठ कर्म कर्ता च राजानो जनक, राजानो रघु जनकौ, ऐसा कुछ तो भी है, राघव जनकौ, और भी दो तीन नाम है, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो इस सबकी स्थिति परिस्थिति एक ही है, बाहर से भले ही एक जन लग रहा है कि बहुत कर्म कर रहा है, एक जन लग रहा है, अगस्त मुनि, जनक जी, राम जी, वशिष्ठ जी, और एक और किसी का नाम मैं भूल रही हूँ, ये सब लोग की बाहर की परिस्थिति अलग अलग है, मनस्थिति एक ही है। इसलिए बैलेंस करने की बात कभी मत करना, कभी नहीं हो पाएगा बैलेंस, ठीक है। और अगर तुम इधर आओगे, अध्यात्म की अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाओ, अपने आप सब कुछ बहुत सुंदर बन जाएगा, मेरी दृष्टि क्योंकि सुंदर बन गई, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तुम कहीं पे भी रहो, तुम गृहस्थाश्रम में रहो, तुम सेवा में रहो, तुम किसी प्रोजेक्ट में काम करो, परफेक्शन आएगा। अध्यात्म कभी ये नहीं बोलता है सब छोड़ दो, हाँ चेंज योर विजन, काम करो पर चेंज्ड विजन से काम करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे, आप लोग सब नोट्स थैंक यू अम्मा। वेलकम, और किसी के प्रश्न हो तो मुझे बता दें, हम लोग आज यहाँ खत्म करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।